Assalamualaikum class. This is Khalid Salim, and in today's lecture, we are going to learn the pattern of application writing, and I would be giving you a homework assignment regarding it. So, just look at the pattern that I'm going to show you. Uh, Application writing का जो pattern होता है, we have to start with the extreme left side, okay, of the margin. Uh, so all of your applications would be addressed to the principal. So the pattern for it is like this: the principal, comma, now the principal of which school? Customs public. Make sure the initial letters of customs, C, P, and school, they are capital, okay. And the next one would be, where is it located? It is located in Gulberg, comma, Lahore, okay. So the place in the city would be coming first, followed by the comma, then the city itself with full stop, okay. Okay, now what would be your subject matter? For example, I would be giving you a home task to write an application to your principal asking or requesting fee concession कि आपको फीस में जो है वो थोड़ी कमी दें, ठीक है. सो इन केस अगर मैं आपको वो वाला टॉपिक देता हूँ आज, तो आपका होगा सब्जेक्ट दैट वुड बी request for fee concession. ओके, सब्जेक्ट लाजमी आता है एप्लीकेशन के अंदर. देन फॉलोड बाय मैडम और सर. इफ योर प्रिंसिपल इज फीमेल, देन एड्रेस हर बाय सेइंग मैडम, और if he is male, then call him started by saying sir. Okay, so we are going to start with madam. Okay. So now you're going to start your application. You are not going to say assalamu alaikum, how are you, okay, because this is a sort of a formal letter that you are writing to your principal. So you'd start with a line of respect. For example, with due respect, या with utmost भी हो सकता है, with due respect भी कह दें या utmost कह दें, ठीक है. विद ड्यू रिस्पेक्ट. अच्छा, एक लाइन होती है, इट इज़ स्टेटेड. स्टेटेड का क्या होता है या क्या चीज़ मैंशनड होती है? ये चीज़ मेंशन होती है जो आपकी सब्जेक्ट में होती है. फॉर एग्जांपल, अगर रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन है, अच्छा, इट इज़ स्टेटेड दैट योर रीज़न फॉर आस्किंग द फी कंसेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं होता तो आई वुड राइट लाइक दिस: विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज़ स्टेटेड दैट my father is unable to bear the expenses of my educational of my education, so it is therefore requested that I be granted a fee concession. So it's like that, okay. With due respect, it is stated that. अब stated that क्या, it would be been pointing towards your subject, ठीक है. सो आपने इस तरह करना है. फाइन, यू नीड टू राइट द होल कंटेंट, होल बॉडी, एंड ट्राई टू यूज एज मच फॉर्मल लैंग्वेज एज यू कैन, ओके. और ट्राई टू बी कंसाइज, ट्राई टू बी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स. एप्लीकेशन इज नॉट दैट लॉन्ग, ओके, बट एवर इज रिक्वायर्ड जस्ट राइट दैट इंफॉर्मेशन, ओके. इन द एंड आप इस तरह कहते हैं, व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट, एक नेक्स्ट में यू विल बी राइटिंग लाइक दिस. नेक्स्ट लाइन: आई shall be very grateful to you, ठीक है, फॉर ग्रांटिंग मी फी कंसेशन. और अगर आप लीव के लिए लिख रहे हैं, फॉर ग्रांटिंग यू लीव, ओके, फुल स्टॉप. देन यहाँ पे आपने क्या करना है, एंडिंग देख लें ज़रा इसको. इट वुड बी लाइक दिस: योर्स ओबीडियंटली, ठीक है. सिंसियरली भी कह सकते हैं, ओबीडियंटली भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके. फुल कॉमा, फिर आपका नेम, जो भी आपका नेम होगा आपने इधर लिखना है, ठीक है. जस्ट डोंट राइट नेम एंड सेमी कॉलम, सॉरी, कॉलम्स एंड राइट योर नेम. डोंट बी लाइक दिस. जस्ट राइट नेम, क्लास एंड डेट, ओके.
and your letter and your application is complete. Okay, so these are the rules. This is the pattern that you need to follow. Okay, with due respect, it is stated that my father is unable to bear the expenses of my education. Okay, and full stop. He's a he's a work he's a you कोई भी आप profession कह सकते हैं. He's a gardener by profession. Yeah, he's a bank employee by profession, and his salary is meager, and he's not able to comfortably meet the needs of uh, he's not able to comfortably meet the expenses of our household, आप कह दें. ठीक है, so it is requested that you may kindly please reduce the fee for us, and I shall be I shall be very grateful to you for granting me fee concession. इस तरह करके you need to write it. Okay, so make sure that you do it on your English B copies in a neat manner. Okay, only the topic that I would be suggesting you, it has to be written with the marker. The rest of it has to be written with a pen. Okay, so I hope that all of you are able to see what I have written. So this is your pattern. Okay, thank you.